और इसके बाद मेरे सारे डोरा केक्स खत्म हो जाएंगे। फिर मैं क्या खाऊंगा? चलो भी ना डोरेमोन, ये सिर्फ डोरा केक्स तो है और आ जाएंगे। क्या कहा नोबिता? क्या तुम्हें पता नहीं है डोरा केक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनके बिना जी नहीं सकता। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? बोलो नोबिता, तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो डोरेमोन? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और तुम्हें पता है मैं इस महीने की पॉकेट मनी भी खर्च कर चुका हूँ। और ये सोच सोच कर मुझे बहुत रोना आ रहा है। अब मैं कैसे खाऊंगा डोरा केक्स? हाँ? अरे हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये देखो। हाँ? यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल। हाँ डोरेमोन, कौन सा रिमोट कंट्रोल? नोबिता, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ये डोरा केक खाने वाला हूँ। जैसे ही मैं ये डोरा केक खत्म करूँ, तुम रिवाइंड बटन दबा देना और इस विंडो को मेरी तरफ मोड़ देना। ठीक है, लेकिन इससे डोरा केक्स का क्या लेना देना, बताओ डोरेमोन। अरे छोड़ो भी, तुम उसकी चिंता मत करो। देखो, मैं ये डोरा केक खाने वाला हूँ। तुम तैयार हो? चलो देखते हैं, ये रहा बटन। डोरेमोन, तुम तो पहले वाले टाइम में पहुंच गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा नोबिता। ये ठीक है डोरेमोन। और देखो, अब मैं इसे फिर से खा सकता हूँ। देखा, मेरा पेट भी नहीं भरा और मैंने एक ही डोरा केक को बार बार खाने का मजा भी ले लिया। क्यों, है ना नोबिता? हाँ, इसमें तो और भी बटन है। क्या इनसे कुछ और भी किया जा सकता है? हाँ, ये बिल्कुल एक सीडी प्लेयर के रिमोट कंट्रोल जैसा है। तुम इससे चीजों को तेज भी चला सकते हो और उन्हें धीरे भी कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो और रोक भी सकते हो। तो चलो ट्राई करते हैं। हम इस बॉल को यूज करेंगे। स्लो। हाँ डोरेमोन, ये तो बहुत स्लो हो गई है। ये कैसे हुआ? स्टॉप। ये तो रुक गई डोरेमोन। और अगर हम इसे छोड़ दें तो ये 3 मिनट में फिर से मूव करना शुरू कर देगी। रिवाइंड। हाँ, वाह, ये तो बहुत मजेदार है। मुझे दे दो। बिल्कुल भी नहीं, समझे? मुझे पता है तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, समझे? हाँ? मैं इसे सिर्फ अच्छे काम के लिए यूज करूंगा। जरा कोई एग्जाम्पल दो। हाँ? क्या कहा तुमने? मैं एक एग्जाम्पल दूं डोरेमोन? पता है तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसे होमवर्क के लिए यूज करूंगा। क्या कहा, होमवर्क के लिए? ऐसा क्यों होता है कि होमवर्क पूरा ना करने की वजह से सब लोग मुझ पर चिल्लाते हैं? बताओ डोरेमोन। वो इसलिए होता है क्योंकि होमवर्क करने में बहुत टाइम लगता है। समझ गए तुम? क्या तुम्हें ऐसा लगता है नोबिता? तो तुम तैयार हो? ओके। ओके, डबल स्पीड स्टार्ट। डोरेमोन देखो, ये मैंने ठीक किया है ना? देखो, अगर हम आंसर्स के ठीक होने की बात ना करें तो मुझे तो ठीक ही लगता है। नोबिता, इनकी आवाज सुनकर लगता है कि मुझे भी डांट पड़ने वाली है। एक बार शुरू हुई तो मुझे डांटती ही रहेंगी। सुनो नोबिता। नोबिता, देखा तुमने? अब मेरी जल्दी हेल्प करो डोरेमोन। तुम्हें पता भी है, तुम पढ़ोगे डबल स्पीड। हाँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है। हाँ, चिल्ला चिल्ला कर मैं थक ही गई हूँ। अब तुम जा सकते हो नोबिता, जाओ। हाँ, तुमने देखा? मैं इसका यूज अच्छे कामों के लिए करता हूँ डोरेमोन। लेकिन सच बताओ तो ना, ये अच्छा काम नहीं था। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तुम मेरे पीछे कहाँ आ रहे हो? वो इसलिए कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और मैं तुम्हें मेरे गैजेट का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने दूंगा। हाँ। पॉज हो जाओ। रिवाइंड। अभी यहाँ पर क्या हुआ था? हाँ, वो बाल बाल बच्चे। अच्छा हुआ मेरी महंगी चीज हाँ? टूटने से बच गई। देखा तुमने? वो एक अच्छा काम था डोरेमोन। हाँ, शायद मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए नोबिता। अब ये पूरी हो गई। मेरी ड्राइंग हमेशा कितनी सुंदर होती है। मैं तो हमेशा कमाल की ड्राइंग बनाता हूँ। चलो सुनियो को परेशान करता हूँ। रिवाइंड हो जाओ।
अरे ये क्या हो गया? मेरी पेंटिंग कहाँ गायब हो गई? अरे ये कैसे हुआ? ये तो मजेदार है। नोबिता तुम यहाँ? तुमने जरूर डोरेमोन के गैजेट से कुछ गड़बड़ की है ना? रुको नोबिता, रुको। तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? पहले मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, फिर जान को बताऊंगा। पॉज। तुम थोड़ी ही देर में मूव करना शुरू कर दोगे। बाय। रुको रुको, अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? अरे नहीं, अब मैं बचने के लिए क्या करूं? मैंने फिर से वही गलती की। अब मॉम को पता चला, वो मुझे दोबारा मारेंगी। जियान, अरे क्या हुआ मॉम? आप यहाँ कैसे? तुमने वो प्लेट देखी जियान, जो टेबल के ऊपर मैंने अभी अभी रखी थी? क्या कहा? प्लेट? नहीं मॉम, मैं नहीं जानता। रिवाइंड। अरे ये सब कैसे हो गया? मुझे पता था तुमने ऐसा ही कुछ किया होगा जियान। सुधरोगे नहीं तुम। मॉम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी गलती नहीं थी। नोबिता याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ शिजुका सुनो, मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। चलो एक साथ खेलते हैं। नहीं, मैं नहीं खेल सकती, मुझे बाहर जाना है, कुछ काम है। आज तो मजा आ गया, ये डिवाइस बहुत ही अच्छा है। नोबिता की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो जियान, चलो नोबिता को पकड़ते हैं, हम उसे बहुत मारेंगे, ठीक है? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है ना? ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ? हे नोबिता, इधर देखो, इधर जल्दी से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ। मुझे वो रिमोट कंट्रोल जल्दी दे दो नोबिता, जल्दी दो। नहीं दूंगा, मैं तुम दोनों को कभी नहीं दूंगा। रुक जाओ नोबिता, रुक जाओ। जाओ नोबिता, तुम नहीं बच सकते। स्लो। पकड़ो 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 मुझे। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब रिवाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं, रिवाइंड करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, अब रिवाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? ये मजेदार है, एक और बार करता हूँ। स्टार्ट, रिवाइंड। मुझे पूरा विश्वास था कि नोबिता कुछ ऐसा ही करेगा। ये नोबिता भी ना। हम बहुत गुस्से में हैं, नोबिता को बुलाओ। तुम उसे अभी रोक दो, वरना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, मैं रोकता हूँ। पता नहीं मैं नोबिता को कहाँ ढूंढूं, वो कहाँ होगा? अरे नोबिता तो वो रहा। नोबिता रुक जाओ, मुझे मेरा गैजेट वापस दो, जल्दी दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ? गैजेट वापस दो। शायद ये मेरी ही गलती है, मुझे उसे वो गैजेट देना ही नहीं चाहिए था। आज मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कहाँ जाओगे मुझसे बच के? बचाओ, कोई बचाओ हमें, प्लीज हमारी कोई मदद करो। नोबिता से मुझे वो गैजेट वापस लेना ही होगा। हे नोबिता, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे गैजेट का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगे। तुम फिर से आ गए, अब मैं तुम्हें रिमोट कंट्रोल से पॉज कर दूंगा। ठीक है, तुम चाहते हो तो कर दो पॉज। अगर तुम यही चाहते हो तो ये लो पॉज। Reflected in the mirror. हाँ, लगता है सुनियो, अब हम सेफ हैं। हाँ तुम सेफ हो, पर पता नहीं नोबिता का क्या होगा। अब नोबिता फंसा। चलो हम दोनों इसे सजा देते हैं। चलो शुरू करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। और अब मैं रिवाइंड करता हूँ। तुम क्या कर रहे
What if I told you that everything you've ever wanted is already yours? That the life of your dreams isn't waiting somewhere far away, it's right here, right now, within your reach. Sounds unbelievable, doesn't it? But that's exactly what Neville Goddard, a master of metaphysical teachings, believed and taught. In this video, we're diving deep into Neville Goddard's powerful principle, your wish is already here. You'll discover how this groundbreaking idea can transform the way you think, feel, and live. We'll uncover the secrets behind the law of assumption, explore how your imagination holds the key to reality, and share practical steps to apply this knowledge starting today. And stick around till the end, because we're going to reveal a surprising twist in Goddard's philosophy that most people overlook but could completely change your perspective. Welcome to Ambition Spark, the channel where we unlock the potential of your mind. If you're ready to take control of your reality, don't forget to subscribe and turn on the notifications. Let's get started. Before we talk about how to make your wish a reality, let's understand the foundation behind Neville Goddard's teachings, the law of assumption. This principle is simple yet profound. It states that whatever you deeply assume to be true, with conviction and emotion, becomes your reality. In other words, if you can imagine yourself already living your dream life and truly believe it, that life will manifest itself in your experience. This isn't about mere daydreaming or wishful thinking. The law of assumption relies on the power of your imagination to create a feeling so real, so vivid, that it begins to shape your external world. Neville believed that the imagination isn't just a tool for escape, it's the creative force that builds the life you live. And at the core of this law is belief. What you truly believe deep within yourself determines what you see and experience in the world around you. David Andrew Weeb, a modern interpreter of Goddard's teachings, explains it like this: your imagination is the workshop where your dreams take shape. When you consistently hold an image of your desired reality in your mind and feel as though it's already yours, you're essentially programming your reality to align with that vision. This is the essence of the law of assumption, and it's what makes this teaching so powerful. Before we talk about how to make your desires a reality, let's dive deeper into one of Neville Goddard's most revolutionary ideas. Your wish is already here. This principle is rooted in the belief that the life you want doesn't exist in the future, it exists right now. It's not about waiting or hoping, it's about realizing that by embodying the feeling of already having what you want, you can transform your inner world into the outer reality. Neville's teachings emphasize that it's not the action you take, but the belief you hold that creates change. He often said that the key to unlocking your desires lies in the way you feel. When you assume the feeling of already being the person you want to be, the universe aligns to make it so. This is more than just positive thinking. It's a deep emotional experience where your mind and heart are fully immersed in the state of fulfillment. Medium articles discussing Goddard's philosophy highlight the importance of conviction in this process. It's your inner belief that acts as the blueprint for your external life. If you believe with absolute certainty that your wish is here, your thoughts and emotions will naturally align with that reality. This alignment is what brings about the transformation as the world outside begins to reflect the world within. The idea is simple. Reality is a mirror. What you hold in your inner world, your thoughts, feelings, and beliefs, is reflected back to you in your outer circumstances. If you want to see change, you must first feel and believe in that change within yourself. Before we talk about how to see tangible results, let's explore the practical steps you can take to apply Neville Goddard's principle that your wish is already here. These steps aren't complicated, but they require commitment and consistency to truly change your inner state, and by extension, your external reality. The first step is visualization. This is where your imagination becomes your most powerful tool. To visualize effectively, close your eyes and create a vivid mental picture of your desired outcome. Don't just see it.
immerse yourself in the experience. Imagine every detail as if it's happening right now. Feel the emotions you'd feel if your wish were already fulfilled. The more real this scene feels in your mind, the closer you are to manifesting it in your life. Next is emotional alignment. This goes hand in hand with visualization. It's not enough to see the desired outcome. You must also feel it. Emotions are the language of the subconscious mind, and when you align your feelings with the state of having your wish, you activate the energy needed to bring it into reality. Joy, gratitude, and contentment are powerful emotions to focus on. Ask yourself, how would I feel if my wish were already granted? Then let those emotions guide you. Another key tool is affirmations. These are short, positive statements that reinforce the belief that your desire is already a part of your reality. For example, instead of saying, I want to be successful, affirm, I am successful. Repeat these affirmations throughout the day, especially during moments of doubt. The goal is to train your mind to accept these statements as truth. Finally, there's consistent practice. None of these techniques will work if they're done only once or twice. Manifestation is a process that requires daily effort. Make visualization, emotional alignment, and affirmations part of your routine. Whether it's in the morning, before bed, or during quiet moments in the day, take the time to step into the reality you're creating. The more you practice, the more natural this new state of being will feel until it becomes second nature. Before we talk about how to fully embrace the power of the law of assumption, it's important to clear up some common misconceptions that often surround this principle. One of the biggest misunderstandings is the idea that simply wishing for something is enough to make it happen. While it might be tempting to think that a casual desire can lead to transformation, Neville Goddard's teachings go much deeper than that. The law of assumption isn't about wishing or hoping, it's about believing. Genuine belief is not just a passing thought or a fleeting desire. It's an unwavering conviction, a deep emotional certainty that your wish is already a reality. This belief must go beyond the surface level and reach the core of your emotions and subconscious mind. Without that conviction, the energy behind your assumption isn't strong enough to create lasting change. Another common misconception is that repeating affirmations or visualizing without feeling the emotions will be effective. While these tools are important, they only work when they're combined with a heartfelt connection to the outcome. For example, if you visualize success but secretly doubt your ability to achieve it, the doubt will cancel out the visualization. The key is to fully embody the state of having what you desire, feel the joy, confidence, and gratitude as if it's already yours. Neville often reminded his students that the law of assumption requires practice and dedication. It's not about forcing yourself to think positive thoughts or pretending to believe something you don't. Instead, it's about training your mind and emotions to align with the truth of your desire, until that truth feels natural and effortless. Before we talk about how to make this principle a part of your daily life, let's look at some real-life examples of people who have successfully applied the law of assumption to manifest their desires. Stories like these not only inspire but also prove that Neville Goddard's teachings are more than just theory. They work when practiced with belief and consistency. Take the case of one Reddit user who shared their journey of manifesting a dream job. They described how they started by visualizing themselves in their ideal role, feeling the excitement of receiving the offer, imagining their first day at work, and embracing the confidence of already having the job. Despite facing rejections initially, they held on to the belief that their wish was already fulfilled. Within weeks, they received an unexpected call for an interview, and shortly after, the job offer they had visualized. Another individual spoke about manifesting financial stability. Instead of focusing on the struggle of their current situation, they shifted their attention to the feeling of abundance. They used affirmations like, I am financially secure, and imagined their bank account showing the amount they desired. By maintaining this state of belief, they reported experiencing sudden opportunities, including a promotion
and unexpected financial gifts. They brought their imagined scenario to life. One particularly striking story involves a person who wanted to reconnect with a loved one after years of no contact. Rather than dwelling on the absence, they began visualizing joyful conversations and moments with that person. They aligned their emotions with the feeling of reconciliation and believed it was already happening. Within a month, they received a message out of the blues, leading to the reunion they had envisioned. These examples remind us that the law of assumption works not because of luck or coincidence, but because of the power of belief, imagination, and emotional alignment. Each of these individuals shifted their focus from wanting to having, and their realities changed to match that belief. To wrap things up, we've explored the transformative power of Neville Goddard's principle that your wish is already here. We talked about the foundation of the law of assumption, the importance of embodying the feeling of your desire, and practical steps to make it a part of your reality. We also cleared up common misconceptions and shared inspiring real-life stories of people who've successfully applied these teachings. Now it's your turn. Start practicing these principles and see how they can reshape your life. Remember, the key lies in your belief, your emotions, and your commitment to living as though your wish is already fulfilled. As Neville himself said, assume the feeling of your wish fulfilled, and observe the route that your attention follows. If you found this video helpful and inspiring, give it a thumbs up and share it with someone who needs to hear this message. Don't forget to subscribe to Ambition Spark for more content that unlocks the power of your mind. Thank you for watching, and we'll see you in the next video.